Breathing in, breathing in, I enjoy my in breath. Breathing out, I smile. जब मैं सांस अंदर लेता हूँ जब मैं सांस अंदर लेता हूँ तो सांस जो अंदर आती है उसका मैं आनंद लेता हूँ और सांस मैं बाहर छोड़ता हूँ. Breathing in, I invite Lord Buddha to breathe in with me with my lungs. जब मैं सांस अंदर लेता हूँ तब मैं भगवान बुद्ध को याद करता हूँ मेरे सांस के साथ वो मेरे भीतर मेरे अंदर आ जाए. The Buddha enjoy breathing in with my lungs. और बुद्ध जो है मैं मेरे फेफड़ों में जिस प्रकार से अंदर सांस लेता हूँ उसके साथ बुद्ध भी आनंद लेते हैं. The Buddha enjoy breathing in, I enjoy breathing in. The Buddha enjoy breathing out, I enjoy breathing out. बुद्ध सांस अंदर लेते हैं उसका आनंद लेते हैं. मैं सांस अंदर लेता हूँ उसका आनंद लेता हूँ. बुद्ध सांस बाहर छोड़ते हैं उसका आनंद लेते हैं. मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ उसका आनंद लेता हूँ. Breathing in, I invite Dr. Ambedkar to enjoy breathing in with me. Breathing out, I invite him to enjoy breathing out with me. जब मैं सांस अंदर लेता हूँ डॉक्टर अंबेडकर को मैं निमंत्रित करता हूँ कि वे सांस अंदर ले उसका आनंद ले. जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ डॉक्टर अंबेडकर भी सांस बाहर छोड़ते हैं. मैं आनंद लेता हूँ वे भी आनंद लेते हैं. Breathing in, I'm aware of the presence of my Father in every cell of my body. Breathing out, I smile to my Father in every cell of my body. जब मैं सांस अंदर लेता हूँ मैं मेरे पिता के बारे में जागरूक रहता हूँ. जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ तब मैं मेरे पिता के बारे में जागरूक रहता हूँ. Father and son, father and daughter enjoy breathing in together. Father and son, father and daughter enjoy breathing out together.
Breathing in, I feel so light. Father, do you feel as light as I do? जब मैं सांस अंदर लेता हूँ तो जैसे मेरे पिता है मैं बहुत ही हल्का महसूस करता हूँ। भार छोड़ते हुए मेरे पिता मैं उसको बहुत ही हल्का महसूस करता हूँ। Breathing out, I feel so free. Father, do you feel as free as I do? जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ मुझे बहुत ही मुक्त लगता है। मेरे जो पिता है उनको भी ऐसे मुक्त लगता है। Breathing in, I see the presence of my mother in every cell of my body. Breathing out, I smile to my mother in every cell of my body. जब मैं सांस अंदर लेता हूँ मेरे माता जी का अस्तित्व मेरे साथ में रहता हूँ। जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ मेरे शरीर में मैं मेरे माता जी का अस्तित्व रहता हूँ। Breathing in, breathing in, I invite my mother to enjoy breathing in with me. Breathing out, I invite my mother to enjoy breathing out with me. जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ मेरे माता जी को मैं निमंत्रित करता हूँ कि मेरे साथ वे भी सांस बाहर छोड़ें। और जब मैं सांस अंदर लेता हूँ उसी समय में मेरे माता जी को याद करता हूँ और वे भी मेरे साथ सांस भीतर लेते हैं। Mother and me enjoy breathing in together. Mother and me enjoy breathing out together. मेरी माता और मैं सांस भीतर ले रहे हैं उसका हम इकट्ठा आनंद ले रहे हैं। मेरी माता और मैं सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसका हम इकट्ठा आनंद ले रहे हैं। Breathing in, I feel so light. Mother, do you feel as light as I do? जब मैं सांस अंदर लेता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि जीवन बहुत ही सुंदर है। तो मेरी माता क्या आप भी देखते हैं कि ये जीवन बहुत ही सुंदर है?
Breathing out, I feel so free, free from fear, free from anger. Mother, do you feel as free as I do? जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ मैं बहुत ही मुक्त महसूस करता हूँ। मेरे गुस्से से, मेरे द्वेष से क्या माता आप इसी प्रकार से मुक्त महसूस करती है? Dear friends, dear brothers and sisters in Vietnam, I have helped train many young generations of monks and nuns and lay practitioners to do social work. So, प्रिय मित्र और मेरे वियतनाम के भाई बहनों, बहुत सारे युवा लोग, उनको समाज कार्य करने के लिए मैंने उनको कुछ मदद की है। And from time to time, one of our monastic teacher or one of our lay teacher died during the time they served. तो हम में से एक हमारे जो मठ में थे, जो ले उपासक थे, उनकी मृत्यु हो गई। To go out and help society during the time of war is very difficult. तो ऐसे समय समाज में जब बहुत ही कठिन ऐसी स्थिति थी, वहाँ जाकर वे मदद करते थे। As a Buddhist, you don't want to take side in the war. You want to embrace both warring parties with compassion. तो बौद्ध के रूप में आप युद्ध में शामिल नहीं होते। दोनों जो पार्टी है, आप बड़े करुणा से आप दोनों की तरफ देखते हैं। As a Buddhist, we want to practice peace and reconciliation. बौद्ध के रूप में जो शांति है और जो समझौता है, उसका आप आचरण करना चाहते हैं। And we do not want to support the war. तो हम युद्ध को किसी भी प्रकार से कोई पाठिंबा नहीं देना चाहते। And our practice is really the practice of peace. तो हम शांति का आचरण करने के लिए हम तैयार होते हैं। We go out in order to help people who are victims of the bombing, of the killing. तो ऐसे लोग जो बॉम्ब का जिन पर आक्रमण हुआ है, जिनको मारा गया है, हम उनको मदद करते हैं। We help war refugees to resettle. तो युद्ध के जो भी मतलब जिनको आसरा दिया जाता है युद्ध भूमि से, उन लोगों को हम मदद करते हैं। We go to poor areas in the country in order to help villagers to set up school and medical centers. तो देश के जो भी ऐसे गरीब इलाके हैं, उन गरीब लोगों के लिए स्कूल का निर्माण करना, उनको कुछ स्वास्थ्यवर्धक ऐसी सेवाएं प्रदान करना, इस प्रकार का कार्य हम करते हैं। And even if we are suspected by one side to be with the other side, and even if we get killed from time to time, we continue that spirit of Buddhism, engage Buddhism. तो कभी-कभी लोग हमारे ऊपर संदेह करते हैं, इस पार्टी के लोग या उस पार्टी के लोग, कभी-कभी हमें मारा ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद बुद्ध धर्म का जो भी चैतन्य है, उत्साह है, उसको हम बरकरार रखते हैं। Suppose you are practicing sitting meditation in the temple, and if you hear the bomb falling around
around the temple, you cannot continue to sit. You have to go out and help people. समझो अभी बुद्ध विहार में आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते वक्त बाहर अगर कोई बॉम्ब का विस्फोट हो गया तो आप वहाँ ध्यान करके नहीं बैठेंगे, आप बाहर जाकर वहाँ की जो परिस्थिति है उसको आप जाकर देखेंगे. There is a lot of things to do outside in order to help victims of the war. तो बाहर में जो भी युद्ध के शिकार हुए लोग हैं उनके लिए बहुत जाकर बाहर में कार्य करने की आवश्यकता है. And also there is a lot of things to do in a situation where there is a lot of poverty and social injustice. और ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, दरिद्रता है, सामाजिक अन्याय है, वहाँ कार्य करने की आवश्यकता है. And the people that we train are young people, monastic and lay. तो हम युवा लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, कुछ भिक्षु होते हैं या उपासक होते हैं. And they are very eager to do something in order to help the people, the country to suffer less. और फिर देश के जो लोग इससे बहुत ही पीड़ित हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए उन लोगों में बड़ा उत्साह होता है, उत्सुकता होती है. And we have learned one basic thing, that if you don't manage to keep your practice alive, you cannot go on very long in your attempt to help people. तो मूलभूत शिक्षा उनको ये दी जाती है कि अगर अधिक देर तक आप अपने मन का ये जो अच्छा भाव वगैरह बनाए नहीं रखेंगे तो आप अधिक समय तक जो लोगों को मदद करनी हो मदद इस प्रकार से नहीं दे पाएंगे. So while you are trying to resettle refugees, while you are trying to set up medical centers or school for children, you have to maintain your practice alive. अगर जो भी शरणार्थी है उनको मदद करना है, स्वास्थ्य वर्धक को सेवाएं आपको देनी है, तो आपका जो भी आचरण है उस आचरण को आपको जीवित रखना पड़ेगा. If you do not know how to keep your practice of mindful breathing, mindful walking, and then you will be carried away by your work and you will lose your practice very soon. अगर स्मृति पूर्वक कैसे रहना है, स्मृति पूर्वक कैसे चलना है, अगर इसकी याद आप नहीं रखेंगे तो जो भी कार्य आप कह रहे हैं उस कार्य में आप बहते चले जाएंगे और जो कार्य जिस ढंग से करना है वो नहीं कर पाएंगे. When you encounter difficulties, you may see that anger or irritation or fear arise. जब कभी आपके सामने कोई समस्या खड़ी होगी तो आप देखेंगे आप में बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आप में चिड़चिड़ाहट हो रही है, कुछ भय आप में पैदा हो गया. And if you don't have a solid practice in order to take care of your anger, to take care of your fear, irritation, and then you lose your practice, you will be burned out very soon. अगर इस प्रकार से अपने गुस्से पर कैसे कार्य करना है, चिड़चिड़ाहट पर या अपने भय पर कैसे कार्य करना है, ये अगर आपको मालूम नहीं और ऐसी परिस्थिति आई है तो बड़े आसानी से आप में गुस्सा आ जाएगा, इस प्रकार से आप में भय पैदा हो जाएगा और आपका जो आचरण है वो आचरण आपसे छूट जाए. And that is why the lesson we have learned from our work is that while doing social work, we have to try our best in order to maintain our practice alive. और इस प्रकार से जो भी सामाजिक कार्य हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये हमें स्पष्ट रहने से हमारा जो आचरण है उस आचरण को जीवित बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है. In order to do that, we know that we have to go home to our sangha at least one day a week in order to practice with the sangha. और ये करने के लिए हम सप्ताह में एक दिन हमारे संघ में पूरा दिन जो है आचरण के लिए हम देते हैं. During that day, we practice sitting meditation, walking meditation, mindful meal, dharma discussion in order to nourish our practice. और फिर उसके दौरान हम लोग बैठकर ध्यान करते हैं, चलते हुए ध्यान करते हैं, हम धम्म पर चर्चा करते हैं ताकि हमारे जो आचरण है उसके बारे में हम जान सकें. So no matter how busy you are, you have to go home to your center in order to attend the day of practice every week.
अब आप कितना व्यस्त है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दिन आपके आचरण के लिए आप अपने केंद्र में जाते हैं और वहां जाके आप आचरण करते हैं। The second thing we have learned from our experience is that you should never go out alone as a social worker. You have to go together with a group of workers to support each other. तो दूसरी चीज हम लोग ने यहाँ सीखी है कि जब आप सामाजिक कार्य के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आप अकेले मत जाइए, अपने संघ के अन्य साथियों के साथ वो कार्य के लिए जाइए ताकि आपको वहाँ उनसे कुछ मदद मिल सके। When you are engaged alone in society, you risk losing yourself. That is why we always go as a group of people, as a sangha, never as an individual. तो जब आप समाज में कार्य करने के लिए जाते हैं, अगर आप अकेले जाते हैं तो उसमें एक खतरा होता है कि जो भी आपका आचरण है उसकी जागृति जा सकती है। अगर आप संघ के अन्य सदस्य के साथ जाते हैं तो ये जो जागृति है वो बनी रहती है। The third thing that we learn is that we should keep our Shila body alive. We have to practice recitation of the precepts and we cannot miss one session of recitation. और तीसरी बात हमने सीखी है कि जो भी मतलब शील है वो शील का पठन करना है और वो शील की जो जागृति है उसका जो आचरण है उसको बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। Our social workers not only practice the 5 precepts, but they also practice the 14 precepts of the order of interbeing. तो हमारे संघ के जो लोग हैं केवल पंचशील का ही आचरण करते हैं ऐसी बात नहीं, तो जो हमारे संघ के 14 शील है उन शीलों का भी वे आचरण करते हैं। And the 7th precept of the order of interbeing is how to learn to live in the present moment and not to lose yourself in the past or in the future. और 7वां शील इस प्रकार का है कि वर्तमान स्थिति में हमने किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार से भविष्य में हमने एक प्रकार से खो नहीं जाना है। This is based on the teaching of the Buddha, Drista Dharma Sukha Vihara. तो ये बुद्ध की मूलभूत शिक्षा है कि हम इस प्रकार से वर्तमान में विचरण करें। We know that Anathapindika was a very wealthy businessman. One day he came to visit the Buddha with 500 colleagues, and the Buddha gave them one teaching. आप जानते हैं कि अनाथपिंडक जो है बहुत ही अमीर ऐसे बिजनेसमैन थे और एक बार वे बुद्ध से मिलने आए और बुद्ध ने उनको एक शिक्षा दी। And the teaching that the Buddha gave them that day is the teaching as how to be happy right in the present moment. और उस समय अनाथपिंडक को बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो इस प्रकार से थी कि हमारे जीवन में हम बहुत ही सुखी, बहुत ही आनंदी, प्रकाशमान कैसे रहे। The Buddha knew that businessmen are very busy and they tend to think too much about the future of their success. They don't have enough time in order to live in the present moment, taking care of themselves and taking care of their beloved ones. तो बुद्ध इस बात को जानते थे कि जो भी व्यवसाय करने वाले होते हैं अपने व्यवसाय में बहुत ही व्यस्त रहते हैं और हर वक्त भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं कि उनके लिए क्या करना चाहिए और वर्तमान में वे नहीं जीते। I think that teaching of the Buddha is a very relevant to our time when most of us are so busy thinking of the future and we don't have the time to take care of ourselves, we don't have the time to take care of the people we love. और मुझे लगता है कि ये जो हमारा समय है इस समय बुद्ध की ये शिक्षा बहुत ही उपयुक्त है जहाँ हम सभी लोग बहुत ही व्यस्त हैं और हमारे जो प्रियजन है उनकी देखभाल करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम भविष्य के बारे में ही अधिक सोचते रहते हैं। When you practice mindful breathing and go back to yourself, you are established in the present moment. जब आप आनापान सति का ध्यान करते हैं, आप सांस की तरफ देखते हैं, तो आप बिल्कुल वर्तमान में आ जाते हैं। And you find out that there are
many conditions for you to happy right in the here and the now. और फिर आप देखते हैं कि जो भी सुख आप चाहते हैं वो सुख अभी इस वक्त आपके साथ में है. Suppose I practice breathing in, I am aware of my eyes, and breathing out, I smile to my eyes. तो जब मैं सांस अंदर लेता हूँ तो मेरे आँख के बारे में मैं जागरूक रहता हूँ. जब मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ मेरे आँख के बारे में मैं जागरूक हूँ. I notice that my eyes are still in good condition. और मैं इस बात को देखता हूँ कि मेरे आँखें जो है अच्छे स्थिति में है. There is a paradise of forms and colors that is available in the present moment. I only need to open my eyes in order to be in touch with that paradise. तो इस वर्तमान स्थिति में जो भी एक प्रकार का स्वर्ग है, स्वर्ग का जो आनंद है वो मौजूद है. केवल मुझे मेरी आंखें खोलकर, वर्तमान की आंखें खोलकर इस स्वर्ग को देखने की जरूरत है. The beautiful blue sky is there. The lovely face of your child is there. The beautiful sunset is there. Many wonderful things, refreshing and healing are there. But if we are not in the present moment, all these wonders of life are not for us. तो जब आप वर्तमान में रहते हैं, आपकी आंखें खोल के देखते हैं तो बहुत ही सुंदर ऐसा नीला आकाश वहाँ पर में है. बहुत ही अच्छा दिखने वाला ये सूर्यास्त आपके सामने है. ये बहुत ही अच्छा अवकाश आपको दिखाई दे रहा है. लेकिन अगर आप वर्तमान में नहीं है तो ये बहुत ही अलौकिक अद्भुत ऐसी चीज़ें हैं, उनका आनंद आप नहीं ले पाते, उनको आप देख नहीं पाते. The practice of mindful breathing, the practice of mindful walking help us to go home to the present moment in order to be in touch with the wonders of life that are available. जब स्मृति पूर्वक आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, स्मृति पूर्वक आप चलते हैं, तब आप इस प्रकार से वर्तमान में रहते हैं और जीवन के जो भी अनोखे अलौकिक ऐसी बातें हैं उसका आप आनंद लेते हैं जो आपके सामने उस समय मौजूद रहती है. If you are not in touch with the refreshing and healing elements of life, you cannot be nourished and you cannot go very far. तो जीवन के ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ताजगी देती है, आपके जीवन को बहुत ही बेहतर बनाती है, अगर उनके संपर्क में आप नहीं है तो फिर आप बहुत आगे प्रगति नहीं कर सकते. When you love someone, जब आप किसी से प्यार करते हैं, the best gift you can make to him or to her is your presence. तो सबसे बेहतर आपका उपहार उनके लिए ये हो सकता है कि आपका जो वर्तमान है अवस्था, जागृति, वो उनको दे. To love means to be present, to be there for him or for her. तो प्यार करने का मतलब ऐसा होता है कि उनके लिए पूरी तरह से आप वर्तमान में रहना, यही उनके लिए सबसे अच्छा उपहार है. When you are extremely busy, when you are preoccupied with your worries, with your fear, with your projects, you have no time to be there for the person you love. जब आप बहुत अधिक व्यस्त होते हैं अपने किसी प्रकल्प में, अपने किसी कार्य में, तब जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बहुत ही प्रेम है उसको अधिक समय देने के लिए आप नहीं रहते, वहाँ उनके सामने आप वर्तमान में नहीं होते. That is why my definition of love is to love means to be present for the person you love. तो इसलिए प्रेम की मेरी व्याख्या ऐसी है कि जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं तो उनके साथ बिल्कुल आप वर्तमान में रहिए. And if you know the practice of mindful breathing, the practice of mindful walking, with one breath, with one step, you can bring your mind back to the body and become available in the here and the now. अगर आप स्मृति पूर्वक सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, स्मृति पूर्वक आप चलते हैं, तो हर एक स्मृति पूर्वक सांस छोड़ते वक्त, सांस लेते वक्त अपने शरीर के बारे में आप जागरूक होते हैं और हर वक्त आप हर क्षण वर्तमान में आते हैं. And when you are truly there, you have something very precious to offer to him or to her, the person you love, and that is your true presence. और जब इस प्रकार से सही में आप वर्तमान में रहते हैं तो बहुत ही मूल्यवान ऐसी चीज़ आप जिन्हें प्यार करते हैं, प्रेम है जिनके प्रति, उनको आप वो दे सकते हैं. There is a mantra that we can practice today.
that is about to offer our presence to the person we love. तो आज ये एक ऐसा मंत्र है जिसका आज आप आचरण कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रेम है उसके लिए वर्तमान अपना उसको आप प्रस्तुत करें। The mantra is effective only when you are really established in the present moment. तो ये मंत्र परिणामकारक तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से स्वयं को वर्तमान स्थिति में रखेंगे। If you practice mindful breathing, becoming aware of your in-breath, and then you will become fully present in the here. तो जब आप स्मृति पूर्वक सांस की तरफ देखेंगे, आने वाली सांस, जाने वाली सांस, तो पूरी तरह से आप वर्तमान में आ जाएंगे। Or if you make one mindful step and go home to the present moment, you will also make yourself available. अगर आप स्मृति पूर्वक अपना एक कदम उठाते हैं और घर जाते हैं तो आप बिल्कुल पूरी तरह से वर्तमान में स्वयं को अलग दूसरों के लिए उपलब्ध कराएंगे। And when you know that you are fully established in the here and the now, you are free from the worries about the future and the sorrow concerning the past, and then you can go to him or to her and practice the first mantra. और इस प्रकार से अभी इसी समय में अगर आप स्वयं को लाते हैं तो जो भी भविष्य की आपकी चिंताएं हैं, भविष्य के जो भी मतलब आपको कठिनाइयाँ है उससे, और जो गत काल की जो भी कठिनाइयाँ उससे आप छूटेंगे और अपने आप को वर्तमान में रख के जो भी आपके प्रियजन हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। And the first mantra is simple. It is like this: Darling, I am really here for you. तो ये मंत्र जो है बहुत ही सरल और आसान है। तो आप कहेंगे कि प्रिय, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। Darling, I am here for you. I am really here for you, body and mind united. और मेरी प्रिय, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। मेरा पूरा शरीर, मेरा जो मन है पूरी तरह से यहाँ आपके लिए है। And then you can practice the second mantra. और फिर आप दूसरे मंत्र का आचरण कर सकते हैं। The second mantra is to recognize the presence of your beloved one. और दूसरा मंत्र जो है आपके जो प्रिय है उनका जो भी आपके सामने वर्तमान में अस्तित्व है उसके बारे में जागरूक होना। You know that your beloved one is very precious for you. If she die, you will cry. आप इस बात को जानते हैं कि आपके जो प्रिय व्यक्ति है आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप रोएंगे। So the second mantra is to recognize that the presence of your beloved one is very precious to you. तो दूसरा मंत्र, आप इस बात को पहचानते हैं, देखते हैं कि आपका ये जो प्रिय व्यक्ति है आपके लिए कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है। And again, if you want to practice the second mantra, you have to be fully alive, fully present in the here and the now. और अगर दूसरे मंत्र का आप आचरण करना चाहते हैं तो पूरी तरह से आपको इसी क्षण में, इसी समय में जागरूकता से रहना पड़ेगा। पूरी तरह से आप उसमें जीवित रहना पड़ेगा। And here is the second mantra delivered in English, and you can practice it in Hindi also. तो ये जो दूसरा मंत्र है इंग्लिश में उसको पठन करते हैं, आप हिंदी में भी चाहे तो उसका पठन कर सकते हैं। Darling, I know that you are there alive, and I am so happy. तो मेरी प्रिय, मैं जानता हूँ कि वहाँ आप वर्तमान में वहाँ पर मैं है और इससे मुझे बड़ा आनंद होता है। To be loved means to be recognized as existing. तो इस प्रकार से मतलब प्यार करना, इस प्रकार को करना है कि उसका जो अस्तित्व है उसको हम स्वीकार रहे हैं। And when you recognize the presence of your beloved one as something very precious to you, you embrace that person with the energy of awareness and mindfulness. और जब आप देखते हैं कि जो भी आपके प्रिय है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मूल्यवान है, तो आप पूरे उत्साह के साथ, पूरे शक्ति के साथ उस व्यक्ति का आप स्वीकार करते हैं। So embraced by your attention, your mindfulness, that person will bloom like a flower. और इस प्रकार से जो आपका प्रिय व्यक्ति है पूरे स्मृति से, पूरे जागरूकता से आपका स्वीकार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई फूल जो है वो खिल रहा
believe me, if you practice the second mantra, you will change the situation. मुझ पर विश्वास कीजिए, अगर ये दूसरे मंत्र का आप आचरण करते हैं तो इस परिस्थिति में आप बहुत ही परिवर्तन ला सकते हैं. And I would like to insist that the mantra is effective only when you are fully present in the here and the now. तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मंत्र तभी परिणामकारक होता है जब पूरी तरह से अभी इसी क्षण आप वर्तमान में है, तभी ये होगा. And to be in the here and the now is the basic practice of Buddhist meditation. तो अभी इसी समय में होना यही मूलभूत बुद्ध धर्म की ध्यान साधना है. In our daily life, our body may be there, but our mind is elsewhere. तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारा शरीर तो वहाँ होता है, लेकिन हमारा मन और कहीं दूसरी तरफ होता है. Your mind may be caught in the regret or in the sorrow concerning the past. तो आपका जो मन है किसी पश्चाताप में या किसी गतकाल के दुख में विचरण कर रहा होगा. And you are locked into the prison of the past, and you are not able to live deeply the present moment. और फिर जो भी गतकाल की मतलब आपकी जो बातें हैं उसमें आप बंदिस्त हो जाते हैं और वर्तमान क्षण का जो आनंद है वर्तमान में आप नहीं रह पाते. Your mind may be caught in the worries, in the fear concerning the future, and you are not able to live the present either. तो आपका मन जो है भविष्य के कुछ चिंताएं, भविष्य की कुछ ऐसी बातें हैं, उसमें आपका मन बहुत ही मतलब फंसा हुआ होगा और वर्तमान में आप नहीं रहते, वर्तमान का आनंद नहीं लेते. But if you know how to bring your attention to your in-breath and breathe in mindfully, you will be able to release both the past and the future. अगर आप अपना मन स्मृति पूर्वक आपकी जो सांस अंदर आ रही है उसकी तरफ लाते हैं तो गतकाल की जो बातें हैं, भविष्य की जो बात है, उससे स्वयं को आप मुक्त कर लेते हैं. In the Sutra of Mindful Breathing, the Buddha advised us to use that practice in order to become alive and in order to release the tension and the stress in our body. तो बुद्ध हमें शिक्षा देते हैं कि इस प्रकार से सांस के बारे में स्मृति रखकर हम और भी अधिक जिंदा दिल हो जाते हैं और भी अधिक अच्छे ढंग से हम वर्तमान में रहते हैं. The practice of mindful breathing, mindful walking is very useful. It can help us generate the energy of mindfulness. तो स्मृति पूर्वक सांस लेना, स्मृति पूर्वक चलना, इससे हमारे भीतर में बहुत ही स्मृति का निर्माण होता है और एक प्रकार की ऊर्जा जो शक्ति है हमें उसका संचारण होता है. The energy of mindfulness is the energy that helps us to be aware of what is going on in us and around us. तो जब हम स्मृति पूर्वक सांस लेते हैं तो एक प्रकार की शक्ति हमें निर्माण होती है. तो इस शक्ति से हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, इसके बारे में हम जागरूक हो जाते हैं. When you breathe in mindfully, that is called mindfulness of breathing. तो जब आप बहुत ही स्मृति पूर्वक सांस अंदर लेते हैं तो इसको हम स्मृति का सांस कहते हैं, स्मृति का ध्यान कहते हैं. When you drink your water mindfully, that is called mindfulness of drinking. जब आप बहुत ही स्मृति से पानी पीते हैं तो आप कहते हैं कि स्मृति पूर्वक आप पानी पी रहे हैं. When you walk mindfully, that is called mindfulness of walking. और जब आप स्मृति पूर्वक चलते हैं तो तब आप कहेंगे कि स्मृति पूर्वक आप चल रहे हैं. And when you cook your breakfast mindfully, that is called mindfulness of cooking. और जब आप अपना नाश्ता बहुत ही स्मृति पूर्वक पकाते हैं, बनाते हैं, तो आप कहेंगे कि स्मृति पूर्वक आप पका रहे हैं. And you don't have to be in a temple in order to practice mindfulness. You can be at anywhere. तो स्मृति का आचरण करने के लिए आपको बुद्ध विहार में रहने की आवश्यकता नहीं. जहाँ कहीं भी आप है वहाँ स्मृति का आचरण आप कर सकते हैं. When you are driving your car, you can also practice mindfulness. It's called mindfulness of driving. जब आप अपनी कार चला रहे हैं उस समय में भी आप स्मृति पूर्वक चला सकते हैं और आप कहेंगे कि स्मृति पूर्वक आप कार चला रहे हैं. With the energy of mindfulness in our body, in our mind, you are much more alive.
और जब आप इस प्रकार से आपके शरीर में मन में जब स्मृति होती है तो आप बहुत अधिक एक प्रकार से जीवित होते हैं. You are always there for yourself and to take care of yourself. आप स्वयं की देखभाल करने के लिए हर वक्त वहाँ मौजूद रहते हैं. आप पूरी तरह से वहाँ जागरूक होते हैं. When fear or anger or despair arise, mindfulness helps you to recognize fear, anger, and despair in order to bring a relief. जब आपके मन में द्वेष, गुस्सा, भय निर्माण होता है, आप दुख को महसूस करते हैं, तब जब आप स्मृतिपूर्वक होते हैं तो उस चीज़ों से मुक्तता पाने के लिए आप कार्य कर सकते हैं. When you get angry, mindfulness helps you not to say or to do anything that can create suffering for yourself and for the other person. जब आपके मन में गुस्सा आता है, तब अगर आप स्मृतिपूर्वक है तो आप ऐसी कोई बात कहते नहीं या ऐसी कोई बात करते नहीं जिससे स्वयं के लिए और औरों के लिए आप दुख निर्माण करें. If you are not a practitioner, and then the energy of anger will push you to say or to do things that make you regret later on. अगर आप आचरण नहीं कर रहे हैं तो आप में अगर गुस्सा निर्माण होता है, आप ऐसी कृति करते हैं या फिर ऐसी कुछ बात कहते हैं जिसके बारे में बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ता है. But because you are a Buddhist practitioner, every time you get angry, you know that you should not say anything, you should not do anything. आप बौद्ध पद्धति का आचरण करते हैं तो आप जानते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से से कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, ऐसा कोई आचरण आपने नहीं करना चाहिए. When you get angry, what you should do is to go back to your in breath and out breath and take good care of your anger. तो जब आपको गुस्सा आता है तब आपने पीछे अपनी सांस जो अंदर जा रही है, सांस जो बाहर आ रही है, उसके तरफ आना चाहिए और अपने गुस्से की हमने अच्छे ढंग से देखभाल करनी चाहिए. With the energy of mindfulness generated by the breathing or the walking, you can recognize your anger, you can embrace your anger tenderly like a mother holding tenderly her baby. तो जब स्मृति पूर्वक आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, स्मृति पूर्वक आप चलते हैं, उससे जो भी शक्ति निर्माण होती है तो आपके भीतर जो भी गुस्सा निर्माण होता है, बड़े प्यार दुलार से उस गुस्से को आप काबू करते हैं. जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को बड़े प्यार से उसको अपने पास में रखती है, उसको प्यार से देखभाल करती है. Taking care of your body, taking care of your feelings and emotions, we should learn it from the dharma. तो हमारे शरीर की देखभाल कैसी करें, हमारे मन की देखभाल कैसी करें, हमारे भावनाओं की देखभाल कैसी करें, ये धम्म से हम सीखते हैं. When we go to the temple, when we go to our sangha, we have an opportunity to learn this kind of practice in order to take care of ourselves and to take care of our family. जब आप विहार में जाते हैं, जब आप संगम में जाते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को सीखते हैं कि आप स्वयं की, अपने परिवार की किस प्रकार से देखभाल कर सकें. As a Buddhist practitioner, we should learn how to listen to our own suffering and the suffering of the people we love. तो एक बौद्ध आचरण करने वाले लोग के रूप में हमने हमारे स्वयं के जो भी दुख है और लोगों के जो दुख है, इसके बारे में हमने सीखना चाहिए, इसको देखना चाहिए. There are those of us who do not have the capacity to listen to our own suffering. We try to cover up our suffering by the way of consumption. तो कभी कभी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं कि जो अपने दुखों को देख नहीं पाते, तो बहुत सारी ऐसी जो अलग अलग बातें होती है जिससे वो जो दुख है उसको एक प्रकार से वो छिपाते रहते हैं. We don't know how to handle the suffering in us. Every time anger and fear manifest, we try to cover up these things by watching television, reading magazines, or eating. तो फिल्म देखते हैं या ऐसी कुछ चीज़ों में हम हमारे मन को लगा देते हैं. As Buddhist practitioners, we should learn the dharma, the way to handle our fear, our anger, our despair. तो हम बौद्ध आचरण करने वाले लोगों ने
किस प्रकार से हमारा ये जो गुस्सा है, हमारा भय है, इसको हम किस प्रकार से इस पर कार्य करें, इसको हमने सीखना चाहिए, कार्य करना चाहिए। It is possible to go back to ourselves in order to embrace our fear, our anger tenderly to get a relief. तो ये संभव है कि हमारा जो भी द्वेष है या भय है उसको हम देख सके और उससे हम निजात पा सके, उस पर कार्य कर सके। It is possible for us to practice looking deeply into the nature of our anger, our fear, in order to get the insight that will liberate us from our fear and our anger. तो ये हमारे लिए संभव है कि हमारा ये जो भी गुस्सा है, जो भी भय है, इसको हम गहराई से देखें और एक प्रकार से हमारे भीतर में एक अंतर्दृष्टि हम निर्माण करें, ताकि ये जो भय है या जो भी गुस्सा है इसको हम अपने भीतर से निकाल सकें। We should visit our teacher, our dharma teacher, and our sangha often in order to learn these practices. तो हमारे जो भी संघ में धम्म गुरु है, उनको अक्सर हमने जाके मिलना चाहिए, ताकि ये जो भी आचरण पद्धतियाँ है उसका हम स्वीकार कर सके, उसका हम आचरण कर सकें। To practice listening to the other person with compassion in order to understand his or her suffering is a very important practice. तो इस प्रकार से जो भी मतलब ऐसे गुरु है, उनको बड़े करुणा से, बड़े श्रद्धा से सुनना चाहिए, ताकि हम इसका आचरण कर सकें। We have to learn how to listen to our son, our daughters, our husband, our wife, in order to understand the suffering and the difficulty of that person. तो हम हमारे जो भी पुत्र है, पुत्रिया है, पति है या पत्नी है, उनके जो भी दुख है उसको समझने के लिए हमने उनको ठीक ढंग से भली भांति सुन लेना चाहिए। We know that a lot of suffering are born from misunderstanding, wrong perceptions. हम जानते हैं कि बहुत सारे दुखों की निर्मिति केवल बहुत सारे गलत फहमियों से होती है। If we listen deeply to the other person, we might recognize the wrong perceptions in him or in her. अगर आप लोगों को ठीक से सुनते हैं तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के प्रति आपका कुछ तो भी एक गलत बोध आपको हुआ है, कुछ गलत ढंग से आपने उस व्यक्ति को ग्रहण किया है, इससे ये दुख आपको निर्माण। And later on, we may help that person to have enough information in order to correct the wrong perceptions. और जो गलत दृष्टि से आपको मतलब देखा जा रहा था, तो बाद में आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जो भी गलत धारणा हुई, गलत दृष्टि हुई, वो उसकी ठीक हो जाएगी। The practice of deep listening, compassionate listening can help restore communication. तो इस प्रकार से गहराई से किसको सुनना, करुणा से किसको सुनना, इससे ये जो मतलब गलतफहमी होती है, इसको हम दूर कर सकते हैं, इन दुखों को दूर कर सकते हैं। The practice can help members of the same family to reconcile, to bring back happiness and trust. तो परिवार के, एक ही परिवार के जो लोग हैं, फिर से सुख को प्राप्त करने के लिए आपस में एक दूसरे को वो समझ सकते हैं, एक दूसरे को अधिक अच्छे ढंग से जान सकते हैं। If there is a conflict, division within our sangha, the practice of deep listening can help restore communication and bring back peace and mutual understanding. अगर हमारे संघ में कोई संघर्ष हो रहा है या कोई बहुत ही मतभेद हो गए हैं, तो अगर गहराई से सुनते हैं तो हम एक दूसरे को इस प्रकार से अधिक अच्छा समझ सकेंगे और एक शांति और एक दूसरे के परस्पर जो भी अच्छे संबंध है उसको फिर से हम प्रस्थापित कर सकेंगे। If we are able to bring back harmony and happiness into our family and our sangha, and then our struggle for social justice, the eradication of social discrimination will become easier, much easier. अगर अपने परिवार का जो भी संघर्ष है, इसमें आप एक सुसंवाद प्रस्थापित कर सकते हैं। अपने संघ में इस प्रकार से जो भी संघर्ष है, उसमें आप सुसंवाद प्रस्थापित कर सकते हैं। तो समाज में जो भी अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, समाज की जो बहुत सारी समस्या है, उसमें भी इस प्रकार से सुसंवाद और एक अच्छा जो बात है वो आप ला सकें। The work of the work for to
our effort to remove social injustice and discrimination will continue for all our lifetime, and will continue with the lifetime of our children. तो जो भी मतलब सामाजिक अत्याचार है, सामाजिक जो भी विषमता है, ये हमारे पूरे जीवन में हमारे जो कार्य है, इस प्रकार से हम करते रहेंगे, इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे. If we want to go somewhere, we should make sure that the car we use is in good condition. अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप इस बात की निश्चित ही करते हैं कि आप अच्छी तरह से अच्छे ढंग से आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं. If there is not enough peace in ourselves, in our family, in our community, we cannot go far on the path of struggle for justice and non-discrimination. अगर हमारे परिवार में अगर कोई अच्छा सुसंवाद नहीं है, अच्छी बात नहीं है, या हमारे संगम में ऐसी अच्छी बात नहीं, तो समाज में जो भी इस प्रकार का संघर्ष है, अन्याय है, विषमता है, इस कार्य के लिए हम अधिक आगे नहीं बढ़ सकते, कार्य नहीं कर सकते. Dr. Ambedkar recommends that we reorganize ourselves in order to strengthen our practice, in order to bring harmony and peace and happiness into our family and in our sangha. तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को पहचाना था कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में इस प्रकार से हम सुसंवाद लाए, एक खुशहाली लाए, और इसी प्रकार से हम बाहर की दुनिया में भी ये कुछ खुशहाली या सुसंवाद जो है प्रस्तावित कर सकते हैं. And I think the most essential thing to do is every time we have a dharma discussion or a dharma talk or other activities, the most meaningful thing is to discuss how to organize ourselves, how to apply the practice in our daily life in order to bring harmony and peace and strength to our family and our community. तो जब भी मतलब इस प्रकार से आप संगम में चर्चा करते हैं, तब ये बहुत बेहतर होगा कि हम अच्छी तरीके से हमारा जो जीवन है उसको हम ठीक से उसकी पुनर्रचना करें, ठीक ढंग से हमारे परिवार की पुनर्रचना करें, ताकि हमारा ये जो काम है अच्छी तरह से भली भांति हम कर पाए. Myself and the monastics from Plum Village, we are very happy to come in this occasion, and we together we shall have 2 days of practice right here. तो मैं और मेरे जो मतलब मठ के जो लोग हैं यहाँ अगर हम लोग बहुत ही खुश हैं, और 2 दिन हम यहाँ मिलकर आचरण करेंगे. We shall have an opportunity to practice breathing together, walking together, sitting together. तो हमें एक मौका मिलेगा कि हम एक साथ सांस लेंगे, एक साथ चलेंगे और एक साथ यहाँ बैठेंगे. We shall learn how to embrace our feelings, our suffering together. तो हमारे जो भी भावना है, हमारे दुख जो है, उसको हम एक प्रकार किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, वो हम करेंगे. We shall learn how to listen to each other and how to speak to each other with loving speech. और हम बहुत ही प्यार से, मैत्री से एक दूसरे को कैसे सुन सकते हैं, एक दूसरे से संवाद प्रस्तावित कर सकते हैं, इस बात को भी हम सीखेंगे. And we look forward to your coming and practicing with us tomorrow and after tomorrow. तो हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कल और परसों हम आपके साथ में होंगे. And maybe tomorrow morning we can start with the practice of walking meditation. और शायद कल सुबह हम जो चलने का ध्यान है, वॉकिंग मेडिटेशन, उससे हम शुरुआत करेंगे. If the first thing we may do is to come and to receive 10 minutes of instruction as how to enjoy every step we make. तो सबसे पहले 10 मिनट के लिए आपको कुछ सूचनाएं मिलेंगी कि किस प्रकार से ये जो ध्यान है उसका हम आनंद ले सकते हैं. And if everyone is following his or her in breath and out breath, and then the collective energy of the sangha will be very powerful, that can nourish and transform all of us. तो अगर हम अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, इसको स्फूर्तिपूर्वक देखते हैं तो एक शक्ति हमें निर्माण होती है, और ये जो संघ की शक्ति है उससे सभी का मतलब एक प्रकार से पोषण होगा, हम सभी उसका आनंद लेंगे. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद.
you very much for such a practical discourse, Venerable High. बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी और एक व्यवहारिक शिक्षा हमें दी है। और इसके बाद कुछ ही दिनों में हम आपकी जो आज का जो कार्यक्रम है उसकी संपन्नता करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पूजनीय पंडित टिकनाथ मान और उनके साथ जो भी उनके ईश्वरी संघ वैसे ही उपासिका संघ जो यहाँ पर मौजूद हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ साथ डॉक्टर योग जो हर साल अपनी खुशी मनाने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद रहते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। वैसे ही कांसम जी जो इस आयोजन में एक हमारे साथ सहभागी रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी के साथ आप सभी लोग जो यहाँ 10 बजे से अभी तक बड़े शांति से बैठे हैं, तो अभी आप सभी को धन्यवाद देकर मैं कुछ सूचनाएं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद अभी जब जाएंगे तो शांति से जाने दीजिए। जैसे उन्होंने कहा है कि कल और परसों सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5:30 तक यहाँ 2 दिन का शिविर रहेगा और वो और अन्य और जितने हैं वो हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सिर्फ तो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो पारमिता की तरफ जाएंगे, तो दुकान के जो अन्य लोग हैं पारमिता के तरफ यानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। आप यहाँ आपका कुछ नहीं कहा खाए होंगे, तो खाना खाने के बाद जो कूड़ा कचरा है वो किसी एक जगह पे या जहाँ रखने की जगह है। सब पाप चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पाम्पि सुत्वारं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं नयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। शिविर में सहभागी होने वाले भाई और बहनों को एक निवेदन है, आपके साथ आपके लिए दोपहर का अपना जो टिफिन है डिब्बा साथ में लेकर आना है। और अभी हम पंचांग प्रणाम करके ये कार्यक्रम संपन्न होना।